So good morning my dear students, जय जगन्नाथ। आउ चलंतु आज क्लास को हमें स्टार्ट करिया। So students आज हम स्टार्ट करिया कोन मैं रेडिएशन फिजिक्स। तो जोटा हमर मेन सब्जेक्ट हम बीएमआरटी रा तो तार फर्स्ट चैप्टर होची कोन रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स डिटेक्शन एंड मेजरमेंट आ गोटे पार्ट अछि जोटा हम नेक्स्ट वीडियोस रे अपलोड करिवि। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करिवे रेडिएशन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मन को क्वेश्चन आसबो कि व्हाट इज रेडिएशन। ओके, सो रेडिएशन कोन ना energy is emitting from a source in the form of electromagnetic waves or particles is generally referred as radiation. तो से कौन कहूची ना energy is emitting from a source गोटे सोर्स थिबो जोटू एनर्जी रिलीज होतबो बा एमिट होतबो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स। कोन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किबा पार्टिकल हमें जानचंती दुटा नेचर था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो मैग्नेटिक वेव हे पारे नहले पार्टिकल हे पारे इज जनरली रेफर्ड एज रेडिएशन। ओके, तापर हम जानिबा रेडिएशन केते प्रकार केला। तो बेसिकली जब देखा जाए रेडिएशन इज ऑफ टू टाइप्स कौन कौन गोटे आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड आ गोटेला नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन द रेडिएशन व्हिच हैव मच सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एटॉमिक ऑर्बिट। ओके, सो कौन ना जो रेडिएशन जार मच सफिशिएंट एनर्जी अछि तार एटॉमिक ऑर्बिट रु इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करबार ताको हम कहबा आयोनाइजिंग रेडिएशन। फॉर एग्जांपल मु बुझौ छी देखो दिस इज एन एटम, this is an atom। ओके, एटम रो हमें जानछथि सेंटर में कोन अछि न्यूक्लियस अछि, न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन्स अछि हला आ कोन बाहर कोन अछि इलेक्ट्रॉन्स अछि। समस्त जानिछथि नील्स बोर मॉडल थिला इलेक्ट्रॉन आउटर सेल ऑर्बिट रे थाय। तो ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन अछि ये जो आउटर सेल रे जो इलेक्ट्रॉन्स अछंती हला माने करा गोटे रेडिएशन आसीला जदी ए रेडिएशन एनर्जी बहुत अधिक थिबो ताले से ए इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो अब ए एटम को कोन करिवो पॉजिटिवली चार्ज कर दो। इलेक्ट्रॉन ओडा पळेला पॉजिटिवली चार्ज कर दो तो सेटा को हम कोन कहबा आयोनाइजिंग रेडिएशन। से रेडिएशन को हमें कौन कहबा आयोनाइजिंग रेडिएशन हैला। तापर होची नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कोन कहूची सेम जिंस द रेडिएशन डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स एटॉमिक ऑर्बिट। ओके, तो जो रेडिएशन जारा सफिशिएंट एनर्जी नथिबो ता एटॉमिक ऑर्बिट रो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करबारा ताको हमें कौन कहबा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जांपल कौन कर रहला हमर एक्स-रे हला एक्स-रे हला जो रे विषय हमें आगु पढिबा एक्स-रे हला गामा रेज हला अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स as well। ओके, सो एक्स-रेज गामा रेज अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन्स एमाने हम जन कोन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भितर कोन हला ना इंफ्रारेड आसला विजिबल लाइट आसला माइक्रोवेव्स आसला एंड रेडियो वेव्स आसला। सो नेक्स्ट पार्ट कोन ना नेक्स्ट पार्ट होची कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जहां भी रहे एंड तांकर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी काहे कि विषय हम जानिबा निहाती दरकार ना जेहेतु हमें इन फ्यूचर वी आर वर्किंग विथ एक्स-रेज एंड गामा रेज सो वी हैव टू नो द वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आसीबो तो सेथि लागि हमको जानिबा दरकार। तो चलो जानिबा कोन ना वेवलेंथ रेंज जदी हमें गामा रेज रेडियो वेव्स ए सीक्वेंस रे चलीबा देन वेवलेंथ रेंज कोन हो इंक्रीज हेका चलीबो लाइक 10 टू द पावर 12 मीटर टू 10 टू द पावर 6 मीटर। ओके, आ फ्रीक्वेंसी कोन हो ना फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हेका जीवो डिक्रीज हो हमें जानछन गोटे रिलेशनशिप कोन ना mu is equal to c upon lambda। तो
जदि हम देखिबा nu is inversely proportional to lambda. ओके सो जदि हमर वेवलेंथ बढ़िबो देन फ्रीक्वेंसी कमिबो तो सही सीक्वेंस रे चलची तो एटा नॉर्मल आपण मानू मन में रखियो पड़िबो. ओके तार वेवलेंथ रेंज केते हला गामा रेज रो 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर रु कम, एक्स रेज रो 1 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, अल्ट्रावायलेट रो 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट रो 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, इंफ्रारेड रो 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर एंड माइक्रोवेव्स रो 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर एंड रेडियो वेव्स रो 0.1 मिलीमीटर रु अधिका. ओके आ फ्रीक्वेंसी सेबा गामा रेज रो फ्रीक्वेंसी केते ना 10 टू द पावर 18 टू 10 टू द पावर 22 हर्ट्ज रे रहयो, फ्रीक्वेंसी सब हर्ट्ज रे रहयो. एक्स रेज रो फ्रीक्वेंसी 10 टू द 16 टू 10 टू द 19, अल्ट्रावायलेट रो 10 टू द 16 टू 10 टू द 17, विजिबल रो 4 into 10 to the 14 into to 7 into 10 to the 14 हर्ट्ज, इंफ्रारेड रो 10 to the 11 to 5 into 10 to the 14, माइक्रोवेव्स रो 10 to the 9 to 10 to the 12, radio waves रो 10 to the 4 to 10 to the 8. It may be vary according to books. ओके सो नेक्स्ट पार्ट कोन हमर ना नेक्स्ट पार्ट होजी गोटे फास्ट कहितली जो कोन की जो हमर आयोनाइजिंग रेडिएशन दिला नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दिला तांतरे जो व्हाट इज रेडिएशन जो कहते ताले गोटे जिंस आसले कि पार्टिकल रेडिएशन हला पार्टिकल रेडिएशन कोन तो पार्टिकल रेडिएशन कोन होजी द रेडिएशन अपीयर्ड बाय ए पार्टिकल इज नोन एज पार्टिकल रेडिएशन हला त कोन गोटे सोर्स थिबो जो सोर्स टा की गोटे पार्टिकल हे थिबो आ से पार्टिकल जो रेडिएशन रिलीज करिवो जहां भी रेडिएशन दबो सेटा कोन कहबो पार्टिकल रेडिएशन. ओके सो सेटा कहजिवो पार्टिकल रेडिएशन. एग्जांपल कोन ना एग्जांपल हमर हबो इलेक्ट्रॉन हबो, प्रोटॉन हबो, न्यूट्रॉन हबो, सच हेवी न्यूक्लियस किछ हेवी न्यूक्लियस अछि लाइक हीलियम हला, कार्बन एटसेट्रा. ओके सो एटा होची पार्टिकल रेडिएशन. ओके देन असला सोर्सेस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन हला तो हम जानि वाला आयोनाइजिंग रेडिएशन तो रिलीज होची बट कोठु मिलु एक्चुअली तो तार दुईटा सोर्स अछि जनरली कोन ना गोटे ना नेचुरल सोर्स आ गोटेला मैन मेड सोर्स. ओके नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स. नेचुरल सोर्स रे कोन कोन आसला कॉस्मिक रेडिएशन आसला, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आसला, रैडन आसला, ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा बा लिविंग ऑर्गेनिज्म जहा बॉडी अछि. तो कॉस्मिक रेडिएशन कोन ना जो रेडिएशन सन रिलीज करूची. ओके प्राय जानि होबनी तो लिखि दो जेडी सन है तो कॉस्मिक रेडिएशन कोन ना जो रेडिएशन सन रिलीज करूची. ओके अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कोन हला ना स्थल भूमि जहा रेडिएशन आछि आ रैडन रहिला आ रैडन वाले एलिमेंट ओके ह्यूमन बॉडी एटसेट्रा ह्यूमन बॉडी रू भी रेडिएशन बाहरुची. ओके तापर मैन मेड सोर्स कोन हला ना न्यूक्लियर रिएक्टर हला जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर जोठी हम न्यूक्लियर वेपन बना होची. ओके आ पावर प्लांट सब जहा भी हला आ मेडिकल एप्लीकेशन जहा भी यूज होची जोथरे रेडिएशन बाहरची आ इंडस्ट्री एंड रिसर्च एप्लीकेशन इंडस्ट्री हो आ कि रिसर्च सेक्टर रे भी हमर जहा भी एप्लीकेशन चालची सेठी भी हमर कोन आयोनाइजिंग रेडिएशन ला सोर्स होची. ओके सो नेक्स्ट पार्ट के बुझिबा. सो नेक्स्ट पार्ट कोन हमर आछी नेक्स्ट पार्ट को जिबा कोन ना रेडिएशन क्वांटिटीज अंडर रे हम आछन तो फास्ट रेडिएशन क्वांटिटी जानिया पूर्व हम गोटे जिंस जानिया दरकार कोन ना रेडियो एक्टिविटी हला रेडियो एक्टिविटी कोन द फेनोमेना ऑफ spontaneous emission of alpha particle, beta particle and gamma rays is known as from a radioactive substance is known as radioactivity. Okay, so कौन कोची ना the phenomena of spontaneous emission of alpha particle, beta particle and gamma rays from a radioactive substance is known as radioactivity. तो गोटे radioactive substance रू alpha, beta और gamma rays रिलीज होबा को कोन कहै छै रेडियोएक्टिविटी कहै छै और एटा कोन गोटे फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन माने कंटीन्यूअस एमिशन चालुथबो. ओके सो रेडियोएक्टिविटी देन रेडियोएक्टिविटी it was discovered by Henry
हेनरी बैक्वेल स्पेलिंग टिके चेक कर दो पिला माने हैला तो हेनरी बैक्वेल ओके तो जेहेतु हेनरी बैक्वेल बाहर करले तो यार एसआई यूनिट कौन हैला बैक्वेल और शॉर्ट रे BQ ओके 1 BQ इज इक्वल टू 1 DPS हैला DPS कौन DPS होची डिसेंटिग्रेशन पर सेकंड हैला माने 1 बैक्यूरेल कहले पर गोटे सेकंड रे गोटे ही डिसेंटिग्रेशन हेची न्यूक्लियस रा हैला तो आ गोटे ओल्ड यूनिट यार अछि ओल्ड यूनिट होची कोन क्यूरी काहे कि ना मैडम क्यूरी बाहर करथले ओके ओल्ड यूनिट होची क्यूरी बा Cu हैला ओके सो 1 Cu is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel एटा मन रखियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट एटा ये कन्वर्जन पई हमको पचारि पारे एग्जाम रे 1 क्यूरी is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel ओके सो अब हम यारो नेक्स्ट पार्ट को जिबा टिके रो मुझे तम सिलेबस देखि दिए या पर कोन अछि को पार्ट अछि रेडियो एक्टिविटी गला तापर फ्लक्स फ्लुएंस करना ओके आजिरो पार्ट को हम एट सारिबा मु आपण मनकर सिलेबस देख देछि हमें बाकी तक क्वांटिटीज जा भी रहला हम नेक्स्ट क्लास रे कवर करबा आउ जदि आपन वीडियो भल लागिता देन सब्सक्राइब करंतु लाइक दियंतु एवं निज सांग मानक शेयर करंतु थैंक यू जय जगन्नाथ।